Hi, I think we are live. It's 1 minute to 1 o'clock. So we'll just give it a minute and to get started. Hi, everyone. I think it's 1 o'clock. So we'll get started. I'll just quickly check if people are joining in, tuning in on YouTube. The topic is very specific today about the volatility, which you have been seeing last week. And of course, we are now moving into the results, right? So today, I think, is the last polling day, and uh, so I'll quickly check. So I have, also opened up the YouTube here to see comments आ रहे हैं आएगा तो मोदी ही okay. Hi Robin, Souvik is saying, Gaurav is saying hello. So we are live now, which is good. And हम लोग आज बात के 27 people are already watching at the start, so which is perfect. Vishek says good afternoon Vishek. सो मैंने एक लिंक भी भेजा था जहाँ पे आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं. सो आई थिंक व्हाट वी विल डू, वी विल यूज दिस एज अ यूजुअल मेथड वेयर you can keep posting your questions in that link. That link is now shared with all the communities: Alpha Blend, Momentum Masters, Value Investing, Prime Quality, Innovating Growth Leaders, and Multifactor Wealth Maximizer. हमने क्या नोटिस किया कि सब लोग ज्वाइन नहीं करे हैं. हार्डली 10% पीपल हैव ज्वाइन द कम्युनिटी, राइट? Which is something we should, I mean, it is absolutely your choice कि आपको community में add होना है. But I think it might be useful if you really wish to kind of plan joining the community. Uh, Advantage ये है कि we can be little interactive there. It would be a feeling of community, and so that your numbers are not shared with others, and the privacy is maintained, right, in terms of data security. Sari communities one way messages हैं which where I or the team can push messages. However, हमने एक common community बनाई है जिसका link भी individual communities में post किया है in case anybody who wish to join the group, and of course then give their consent to, so that people can see each other, because in the group you can see each other. वहाँ पे आप डिस्कशन करो. आई विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट डिस्कशन फोरम डायरेक्टली, बट एनी क्वेश्चंस आई सी देयर coming up will of course answer via audio, via video, via this YouTube way. Also, as I mentioned, in this weekly catch up, we have also shared a link with all of you where you can send questions. So I'm quickly seeing if there are any questions received.
If yes, we'll quickly take those and we'll get started accordingly. अच्छा, बीच में मैं एक बार YouTube भी देख लेता हूँ. Okay, so many questions. Please speak in English as much as possible so that non-Hindi speaking investors will understand. Okay, Naveen. Amit saying hi, Robin. Ashmi Mehra is asking feasibility of launching a combined subscription for all gold fee small case, maybe explode. Okay. Minal is saying, hi Robin, can we use margin trading facility to hold stocks for long term for one of your portfolios? I'm already a multi-factor subscriber. What's your advice? All right. Uh, Okay, I'll answer that question. And I'll try to speak in English. Maybe if you have a question in Hindi, I mean, if you post a question in Hindi, I'll absolutely answer in Hindi. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हिंदी में आप पूछिए तो मैं जवाब देता हूँ. But otherwise I'll try to use a mix, so that everybody can really follow. So what I'll do also before I go to the YouTube comments, I'll quickly see if there are any questions coming in the communities, and if there are any questions in the okay. So I have काफ़ी कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन फोरम में लोग कुछ कुछ बता रहे हैं कि उनके पास काफ़ी कुछ है, इन टर्म्स ऑफ कितना लैंड है, कितना यूएस मार्केट में. बट आई थिंक वो नंबर्स आई डोंट नो. आई मीन यू हैव टू टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर टू हैव एनी स्पेसिफिक एडवाइस. सो लेट्स नॉट टेक गो देयर. बट जो भी क्वेश्चन स्मॉल केस के अराउंड हैं, will absolutely take that, right? और कोई भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे you can directly ask. I'm just taking another 30 seconds to see if there are any questions on the what you call in the forms we have submitted this morning, right? Where we asked you to submit the form. I mean to come and post your questions. मैं वो एक बार और check कर रहा हूँ. And we have around half an hour and even more if required to answer all your questions. अच्छा, बाकी एज आई सेड आज शाम से पोल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, एग्जिट पोल्स स्टार्ट हो जाएंगे. एंड आई एम श्योर exit polls won't take any risk of not showing up also as a perfect kind of stable government. So कई scenarios हैं यहाँ पे. Exit poll, I'm very sure that they will come up with the answer that it's a very, very stable government, and that's what I think a lot of you are anticipating. And me as an investor in equity markets really would like to see that, to be very honest, because I do not want markets to take any hit, right, in terms of any coalition government there. So मेरा पर्सनल चॉइस तो ऑफ कोर्स वही है. एग्जिट पोल्स भी आई एम श्योर उसी फेवर में आएंगे. लेकिन रिजल्ट्स तो रिजल्ट्स हैं, एंड दैट आर रियल रिजल्ट्स. तो रियल रिजल्ट्स में ऑफ कोर्स डिफर, विच वी विल ओनली नो ऑन 4th. एंड उसके लिए हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट इन अ वाइल. सो आई एम जस्ट चेकिंग. या एंड आपने अगर किसी ने भी कोई क्वेश्चन पोस्ट किया तो यू कैन ऑल्सो पोस्ट इट हेयर so that we can also pick it again, right? Mm. Yeah, so I'm now in the form. Just a second, guys. Should be prepared in a better way, but अभी तो जो है वो है, that's the reality. So मैं एक बार questions चलिए ठीक है. So that's it's opening in the mean, and let me then quickly go back to the questions. Starting से pick करते हैं. So Minal, if you really wish to do margin trading, I mean in terms of pledging your stocks, I think any weekly, monthly portfolios really won't do a lot of justice. Weekly, to absolutely not. Multi-factor, I think, is still all right use case there, because the churning would be very slow in terms of the rebalance, and whenever the rebalance happens, it is also hardly 20-25%, which means you have a long term kind of option to kind of pledge that in case you really wish to, as long as your risk profile, as long as your advisor advises you to do it, and of course it's your own choice. But from a if you are a multi-factor subscriber, I think you can really go ahead. Usually you will find all the stocks which we pick, which will be applicable for any pledge. Usually low volume stocks or illiquid stocks broker do not allow. But of course it is also different with broker and broker, where I'm sure your broker would be able to confirm if it does provide the margin trading there. Naveen, okay, I am already speaking English.
Ashmi, I think that option has now gone. I remember there used to be a time when there used to be an option to have a single subscription for all small cases for a small case per small case house, per I mean fund house or the, the team which manages. But I think वो काफी time से it has been discontinued because it was misused, I believe. When people were subscribing and they were not really subscribing for investments, but they were subscribing to share in Telegram groups. And then, other people who were genuine investors were kind of misled into, uh, sharing names on Telegram channels. And also, उसी से याद आया कि I also see people posting their screenshots in the Telegram open community. Avoid it, right? Of course, we will remove those if you post, but क्यों हमारा आपको admin काम add करना है? Avoid to avoid putting any screenshots of any small cases, right? Which doesn't help anyone because उसमें क्या होगा उसमें सारे community, right? वैसे you have individual communities for each small case, but the common community is for all the small case. अब वहाँ पे if you actually में स्क्रीनशॉट पोस्ट करोगे और मैंने देखा आई मीन आई डोंट वांट टू नेम इट बट व्हेन आई चेक दैट कम्युनिटी आई चेक इट वंस अ डे I saw people are putting screenshot of old composition because those people have not even renewed. I mean, say rebalance their composition. So वहाँ पे फिर और पूछ रहे हैं कि ये कौन सा स्मॉल केस है फिर वहाँ पे काइंड ऑफ इट इज मिसलीडिंग सो वो नहीं करिए अवॉइड करिए बाकी आप community is for investing in markets people who are very active there are two ways right people who kind of trust the process trust the system have invested in small cases they leave it to the small case manager to decide what to do and then they do not really worry about a lot of volatility. I have a lot many investors who tell me that they only log in to the app when the actual rebalance email come they do not really they remain log out so that they don't have to check. That's the very beautiful way of managing the volatility and not really getting involved. But I know that there's a lot of people who really want to see every day every hour, and I understand that they are active people in the markets, and which is fair, right? Which is fair because you're learning the skill. And I think that's the advantage of having a community where because it's a very stress driven game in terms of participation in markets with when you are doing it so actively. Yeah, it is good that few people I saw were sharing some nice gifs right around beer and bull, and that's good fun. So do that, but do not really share your screenshots, and it doesn't help. It doesn't help anyone. Um, ओके सो आयुष्मी अंशमी मेहरा आई आंसर द क्वेश्चन चिराग पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए आई थिंक आप मार्केट वोलेटिलिटी के लिए पूछ रहे हो या क्या पूछ रहे हो आई थिंक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है जिन लोगों ने दोज हु आर एक्चुअली इन्वेस्टेड while going into the results. I mean, it's a very good thing you have done as long as I've been saying in my audio notes that it is within the limits of 60-70% because जिन्होंने नहीं किया है वो मंडे में भी पार्टिसिपेट करेंगे but then once the direction is clean आपको फोमो रहेगा कि यू विल ऑलवेज हैव दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट जब वो आई एम श्योर अभी खैर एक ही दिन है तो उसमें एंटिसिपेट करने का कोई पर्पस नहीं है आज शाम से एग्जिट रिजल्ट्स आ जाएंगे आई मीन पोल्स रिजल्ट्स आ जाएंगे और एग्जिट पोल का भी क्या सिग्निफिकेंस है इट्स हार्डली अ डे राइड सो जस्ट वेट फॉर दैट क्लैरिटी एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट द quarters to come are absolutely very bright. Ajay Tomar is asking, hi, hello, good afternoon. Ajay Tomar is asking, Golfi multi-factor को describe कर दो sir. My view is long-term and minimum rebalancing. I'm able to hold stock for 10 years long. So Ajay, I understand that you might be willing to hold stocks for 10 years, but I have been saying multiple times that for us as a small case offering, we would not have any stock which remains in our portfolio for 10 years. And because I have been explaining why we won't do that, we follow something called multi-factor strategy in DICE, and that believes in rebalancing because of avoiding the cyclicality nature of sectors. Now, I have been writing about it, and I'm also writing something on LinkedIn these days, where um how any single factor, be it the size, which is the market cap of the companies, or if you want to say only alpha, only momentum, those will always be in one sector at a point in time. Say defense में बहुत momentum है, PSUs में momentum है, right? An example. But in a long term, to kind of override that cyclicality or to overcome that cyclicality, that is where multi-factor investing really comes into play. And when multi-factor investing comes into play,
you of course have to rebalance, because there will be parts of the period in the entire year, in the entire say couple of years, where you have cycles of chemical sector, cycle of pharma sector, cycle of IT sector, right? All of that. And to get the advantage of all of those cyclical movements, absolutely you need to do rebalance. Plus, and that's one reason to overcome the cyclicality behavior of market. Second, which is a fair reason about existing investors and new investors. Existing investors do want to book profits at regular intervals, and new investors do not want to buy something at 30% up, right? They want to buy fresh research, which is available at the rebalance. So आप invest करिए 10 साल के लिए, एज अ कॉम्पोजिशन में इन्वेस्ट करिए वेल्थ जनरेशन के लिए, बट नॉट थिंकिंग कि ये एक स्टॉक है तो मैं इसको कभी नहीं बेचूंगा। वो आप करो, बट वो आप पैरेलली करो, नॉट डू वाया मल्टी फैक्टर स्मॉल केस। Sovic has zero positive results in both alpha and value in the last 4 months. In fact, my fees has not been recovered yet. Any reason behind such underperformance? I understand, Sovic. Lot of volatility. I totally get it. But just give. I think I'll only ask that whenever somebody pay a fee, I usually tell them that try to put an amount which is equivalent in a way that it should not come more than 1% of your total say fees you have paid. So if you have say bought say alpha blend, which is 2,500 for what you call 6 months, which is 5,000 rupee a year, then you should not have investment which is less than 5 lakh in that. Otherwise, the transaction charge, the rebalance cost, the fees you have paid would be justice. So as long as Sovic you have invested the capital accordingly to the fees, if you give it 1 year from your date of investment, which is still 8 months away, right? Because you have done 4 months ago, as you're saying, I'm very sure that you will be able to generate some alpha and of course able to recover the fees. That's what I believe in, because you have to really kind of look at this period of last 3 months has been very volatile, and there are few stocks which have really underperformed because either of regulatory actions or because of government decisions on some pricing. But at the same time, there are few stocks which balance them, right, in on the higher side, and therefore, as a portfolio to portfolio, the drawdown has been minimum. I mean, it's not been so high. And that is the reason why there was never a need for us to shift to any other asset class, right? Whether it is liquid or it is gold, because the benchmark which we set for ourselves in terms of the drawdown was in the lines of our expectations, right? But जहाँ तक Souvik, to answer your specific question, I think to recover your fees and to make sure that you are not going beyond the 1% rule, which is usually the right number to give the right kind of value to your money. Wait for another 8 months, I'll say minimum. आलोक जी सिंह, दूसरे स्मॉल के 6 मंथ्स में अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, बट आपका स्मॉल के लॉस रिकवरी करके कुछ खास रिटर्न दे नहीं पाया, वाई सर? देखिए, 6 महीने में तो हमने भी अच्छा रिटर्न दिया है। आई मीन रिटर्न की तो खैर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए पब्लिक फोरम में, बट पॉइंट बीइंग कि अगर आप 6 महीना दिखाओगे, राइट, जनवरी से जून, सॉरी दिसंबर से मई, जो कि फिनिश हुआ यस्टरडे, सो 6 मंथ्स रिटर्न हैव बीन वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी हाई। हाँ, वही 3 महीना लिखोगे तो दे हैव बीन वेरी पुअर। तो आई टोटली अंडरस्टैंड। सो लेकिन अब और स्मॉल केस ने रिटर्न अच्छा दिए हैं, वो which will be the case, right? So there will be periods where one strategy would work, another won't work. And if you see my 1 hour long video on the multi-factor strategy, right, you will see that how alpha blend being a two-factor strategy, alpha and low volatility, and if you see the drawdown it had during the say any corrective action in 2008, 2013, 2018, it was much higher. But on a longer term basis, एंड मैं इतना लॉन्ग टर्म भी नहीं बोलता, लॉन्ग टर्म यूजुअली इंडस्ट्री में 7 साल बोलते हैं, मैं तो इतना लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं करता। मैं कहता हूँ कम से कम मार्केट में आए हो तो 1 साल से कम से तो पहले तो आपको कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। आई थिंक दैट्स हाउ यू शुड नॉट। तो तरुण का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है और वो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किया है तरुण ने, एंड दिस विल बी गुड एग्जांपल फॉर अदर्स। So he's saying he invested in Alpha in January. Now his return is -7%. Now it would be very good to need. I mean, and of course he is now saying no need to worry, and he has trust in the system. But Tarun, यहाँ पे ना एक gap है. Gap is which I think everybody should understand. It is impossible that if you have invested in January
and you are sitting in negative return is impossible, because if you look from Jan to now, it has made a lot of returns. What is happening, right? What the subscribers are doing. I was with a customer yesterday, I mean with a kind of a client yesterday, and he was a multi-factor investor. And what he was trying to kind of show me, and that's how the system is designed, is so he has say 5 lakh as a minimum investment amount of multi-factor. So he has invested that money, right? Um, and when he was trying to invest more, of course, the option which comes is starting from 3,500, right? You can add 3,500 rupees more to that multi-factor small case, which is a minimum investment we have kept. I've been telling that the amount we have set up for each small case, be it 25,000, 15,000, 20,000, which is the amount set up in the all the other small size small cases, that should be the minimum amount you should think about adding, so that the stocks we have given in the kind of in the structure in the basket is bought by you in the same proposition, in the same composition, with the same weightage. Now, what happened yesterday, as an example, I was with a this gentleman of multi-factor investor. When he's trying to invest more, of course the system will give you to invest the minimum investment amount, and that will tell what was telling in the system that 3,500 can be invested in multi-factor. And when you put 3,500 or 5,000, it will only show two stocks and not nine. I have nine stocks in multi-factor, but because you're trying to put a lesser amount, it is not showing the nine stocks, it is showing only two stocks. You increase the amount to 15,000, it will start showing five stocks. Unless you increase the amount to 50,000, it will not show you nine stocks. And if you're not buying in the same composition, in the same percentage as in the small case, your returns and the returns of small case would absolutely not match. And that is where people, I think, the new users have not understood the product well. Now, तरुण का एग्जांपल लेते हैं. I hope I can take the name directly. तरुण का एग्जांपल लेते हैं. तरुण ने जनवरी में इन्वेस्ट किया है. I am very surprised, and it would be really very good for me, Tarun, if you book a meeting with us and explain how it is possible that when the index to index value of January to now is not negative, it's positive. How, why you are sitting in mind? Because what has been what is the case happening is people are investing, say, some amount, market is falling, market is rising, they think that they should average. People end up buying, for example, yesterday example, because he invested 10,000, he ended up buying two companies only out of nine in whatever ratio the system calculated, right? And then what happened? The In those three companies which he ended up buying, or anybody would end up buying if you put a smaller amount there in form of SIP, in form of lump sum, but invest more use cases, it will give you these stocks which it can easily buy, right? Number of quantity, correct? Number of quantity it can easily buy. What in that case will happen? The weightage we have given for these three companies and the weightage you have in your portfolio is absolutely not matching. It is absolutely not matching, and that would be the root cause of returns not matching the expectations. I mean, that's one. Of course, if the performance itself is not good in 3 months, it's because of the market volatility, and of course, it has to get better. But point being, if Tarun, you've invested 6 months ago, and in 6 months when the index have given a lot of money in terms of the return, and you have not, it simply mean, without checking in system, that you are investing at irregular intervals. You have not invested in January and has kept as is, right? You're adding more capital. You are adding capital which is not exactly proportion to the investment amount it should do. So that is the reason. But yeah, thank you for trust. So that will absolutely. Naveen said something but retracted the message. Now going above to the questions. Amit, you said you would invest in alpha and not multi. Why, if I can rebalance timely, ROI better किसकी होगी? If मैंने बोला मैं अल्फा में इन्वेस्ट करूंगा and not multi. No, from a rebalance perspective, my personality is my behavior is of a need basis rebalance. So I would invest in need basis rebalance. But historically, if you see my video, there is a, I mean, CAGR difference in a two-factor strategy versus four-factor. Two-factor strategy, yeah, alpha strategy, if you think about, has of course outperformed
इवन मल्टी फैक्टर तो टू फैक्टर भी है ना, लेकिन अल्फा स्ट्रेटजी हैज आउट परफॉर्म। बट उसका जो वोलेटिलिटी है, इफ यू लुक एट द नंबर्स ऑफ द पास्ट, जो मैंने शेयर किया स्मॉल केस वीडियो में, volatility is much higher. When Nifty fall had a fall of 50%, Alpha strategy had a fall of 68% in the strategy perspective, from a Nifty strategy perspective. And therefore उतना volatility भी तो आपको undergo करना पड़ेगा, if you think about it. Kaushik saying every stock immediately after purchase is going down. Please, when we will see the green. अच्छे दिन आने वाले हैं कौशिक. Don't worry. I'm sure there has been a rough ride of last 3 months. For many of you who joined after looking at the first 3 months returns, which ideally should not be the case. अब ऐसा सोचो कोई चीज़ एक ही लाइन में इतना बड़ी है, राइट, उसको कंसोलिडेट होना है. सो अगर हम 160 तक इंडेक्स में पहुंचे हैं, राइट, वी वेंट टिल 160 इंडेक्स फ्रॉम 100, और वहां से हम से 40 तक आए. अब वो करेक्शन ही तो है. अब वापस से हम 60 पे जाएंगे जब, सो आपको वो जर्नी में यू विल गेट दी वैल्यू देयर. बट एक साल सब दीजिए. आई रियली रिक्वेस्ट कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डेट से एक साल तक कुछ मत चेक करिए, कुछ भी टाइम मत करिए मार्केट को. जस्ट 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 फॉलो द प्रोसेस. हाँ, दूसरा स्मॉल केस का मैं क्वेश्चन समझता हूँ, बट देखिए वो मेरा कंट्रोल नहीं है. आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू स्टार्ट अ सीरीज विद अदर स्मॉल केस मैनेजर्स. मैं अपने यूट्यूब वीडियो पे आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ कॉल अदर स्मॉल केस मैनेजर्स टू हैव अ ओपन डिस्कशन, सो दैट आप लोगों को भी कॉमन लर्निंग मिले. कुछ स्मॉल केस मैनेजर्स को मैं अच्छे से, आई मीन आई नो देम पर्सनली, आई हैव स्पोकन टू देम 1-to-1. सो मैं आई रिक्वेस्ट देम टू कम टू माय चैनल. मे बी वी कैन डू अ सीरीज इन Q3, जुलाई से प्लान करता हूँ मैं, सो दैट यू कैन हेयर views with both small case managers together. So but I really do not know कि किसका मैं as a habit हम सिर्फ इंडेक्स को देखते हैं. हमारा इंडेक्स निफ्टी 750 है, तो हम अपना बेंचमार्क को मॉनिटर करते हैं, हाउ द बेंचमार्क इज डूइंग, विच इज निफ्टी 750 over a 6 months rolling period, 1 year rolling period. We really do not see different strategies जो अदर स्मॉल केस मैनेजर्स की होंगी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि अंडरलाइंग थ्योरी क्या है. मुझे मल्टी फैक्टर स्ट्रेटजी जो कि निफ्टी इंडाइसिस पे अवेलेबल है, इट्स अ पब्लिक इंफॉर्मेशन. वी आर building something on the top of that layer, and therefore we are not biased, and so that we do remain unbiased, we follow that and do not really look at anything around except the indices. Sandeep Tandon, Quant MF says we are a risk management firm. Returns are by product. So how serious do you take risk management in the small cap? We take it very seriously. I have been writing about it, Sandeep, and I have done that video where I actually detailed out how the multi-factor investing strategy had has higher risk-adjusted return and has lower standard deviation in terms of the volatility. So अगर आप वो मेरा एक स्लाइड है, मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ if time permits, where it's proven time and again that multi-factor strategy over a long period, even starting from a short period of 1 year, right, has outperformed the broad market indices with better risk adjusted. For each unit of risk you take, right, you have higher returns. एंड संदीप जी के तो सभी फैन हैं, हम भी फैन हैं. आई मीन मैंने उन्हें मिला नहीं कभी, बट कभी मिलूंगा तो. बट आई डू लिसन टू संदीप टंडन जी. अल्फा ब्रांड थ्री स्टॉक विच वेंट बाय माइनस. ओके, राइट ऑफ बैलेंस. हाँ देखिए कौन कौन से स्टॉक्स थे. एक तो अभी एक कंपनी थी जो रेगुलेटरी इशू आया, और वो रेगुलेटरी इशू इतना छोटा है. आई मीन छोटा बड़ा तो मैं नहीं बोल सकता, कमेंट नहीं कर सकता, बट पॉइंट बीइंग आप देखो वो स्टॉक उस दिन कितने सारे लोग पैनिक कर रहे थे हमारी कम्युनिटी में कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन आई थिंक अगले दिन ही, आई थिंक यस्टरडे ही, वो स्टॉक काफी रिकवर कर गया, राइट, इन अ सिंगल डे. क्योंकि देखिए नी जग रिएक्शन हमेशा आएंगे मार्केट में, कोई भी न्यूज आएगा. अ, अब वो जो कंपनी है जिसकी बात हो रही है, कल की एग्जांपल बात हो रही है, ऑफकोर्स रेगुलेटरी नोबडी इज अवेयर एंड नोबडी हैज अ कंट्रोल ऑन. बट जो वो कंपनी है, जो वो फाइनेंशियल हाउस है, वो इतना राइटली अंडर वैल्यूड है कि जब वो वैल्यू अनलॉकिंग करेगा ना आपकी, once the say they have responded and they have settled the regulatory issue, it's a real unlocking of value which will happen in that company. That's how it is. और कौन सा है सौविक, मुझे थोड़ा बताना, बट अलग से, बट we will
Some multi-factor stock has fallen by TR. You don't know, no, Dev. You need not be concerned because there will be some other stock which is also risen by 20%, and therefore your multi-factor is still flat, right? अगर कोई 10% नीचे गिरा है तो कोई 10% ऊपर भी हुआ है. यही एडवांटेज होता है कि this is a basket, and to kind of take the advantage of this phenomena, avoid random investment, because when you do random investment of 5,000, 10,000, 15,000, you may get unlucky, or maybe lucky, it could be anything, that you end up buying that stock only and not the basket in that proportion which is falling, or other way around, if you end up buying the stock which is rising, you are averaging down your gainers. So never do random investment. We get a lot of pings. People say you're not responding. Can we add 5,000, 10,000? I do not know. There is, I mean, and there is no point, you people asking during the market कि मार्केट नीचे जा रहा है, ये वाला स्टॉक खरीद, ये वाला स्टॉक को एवरेज कर लें क्या? उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा जाएगी. आपने इन्वेस्ट किया है, प्रोसेस को फॉलो करिए, 1 साल का वेट करिए मिनिमम, एंड देन विल ऑफ कोर्स स्टॉक. तरुण का मैंने आंसर दे दिया. कैसे हुआ वो, आई मीन तरुण, आई वांट रियली वांट टू नो कि हाउ कैन इट कैन गिव अ नेगेटिव रिटर्न व्हेन द इंडेक्स इटसेल्फ इज नॉन नेगेटिव. आप क्या कर रहे हो ऐसा अपने साथ, क्यों कर रहे हो? हाउ मच परसेंटेज डाउन स्मॉल केस इन्वेस्टमेंट वी शुड पुट लम सम, एंड हाउ मच? भूषण जी, आई थिंक इट इज irrespective of the percentage drawdown. I always have been saying, do only add during rebalance. There is no number when something fall for 5%. Do we know that it will stop at 5%? We do not know, right? Of course, you are a part of community, I know. So we, of course, will keep you informed in terms of our understanding of the coverage of that company. But having said that, there is no formula here that आप 5% नीचे गिर गया तो आप और मनी ऐड कर दो, चलो अब मैं 50 शेयर ऐड कर देता हूँ. I think as there is no generic formula here. Plus, of course, you are a part of community, which I am aware, and therefore we can absolutely talk there. Will you consider adding stocks that will be directly if the current government comes to power, like fairly valued PSU defense? So अभी ये तो बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है ना, आप ऐसा सोचो. अब नाम नहीं लेना चाहिए, बट क्योंकि वो लिंक हो जाता है, बट जो बड़े बड़े हमारे हाउसेस हैं इंडिया में, बस सब बोल रहे हैं कि अच्छा ये वाली कंपनी लो जो स्टार्टिंग फ्रॉम ए है, राइट? ए बिकॉज अगर गवर्नमेंट आती है, मोदी जी की गवर्नमेंट आती है, तो वहाँ से एडवांटेज मिलेगा. तो कल काफ़ी बड़ा राइज हुआ उस कंपनी में. अब ये तो एक जनरल पब्लिक इन्फॉर्मेशन है ना. अगर ये इतनी ही कॉमन सेंस बात है, तो सभी लोग फिर वहीं पे पैसा लगाएंगे, राइट? आई मीन वाई FIs will take out money, why and when DIs have to invest, why they will put into all sectors, why our quant engines will not give us the well distributed sector driven composition, and only tell कि ठीक है आप ये वाला खरीद लो because गवर्नमेंट आने वाली है. ऑल ऑफ दैट, ये सब बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है. ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, और अगर आपको प्ले आउट करना है वो थीम्स, देन एब्सोल्युटली यू कैन विश टू प्ले आउट. बट हमारी एक अप्रोच, राइट? देयर इज अ वे वी हैव डिजाइन आवर पोर्टफोलियोज, जो कि एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है. और अभी हमें 7 months हुए हैं. For none of the kind of, and I'm not saying that we are very stringent about the approach evolves every month, every 6 months, every 1 year, whenever there we find new market data, right? Data driven approach है. बट ऐसा नहीं है कि बिकॉज हमारा बायस हो रहा है कि अच्छा ये गवर्नमेंट आएगी, वहाँ पे दोस्ती है, कुछ भी है, चलो ये वाला खरीद लेते हैं. सो वी आर नॉट इन द गेम ऑफ kind of doing a shortcut here, because people who have invested money with us are long term investors. I mean, that I will suppose, right? uh, so point being, follow the process, things will align. What should be the investment split between small case and म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कैटेगरी हैं. RC ट्यूब, आपका नाम आ रहा है चैनल पे, उसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. आप स्मॉल केस इज अ इक्विटी लेड प्रोडक्ट मेनली. देयर आर फ्यू स्मॉल केस विच आर से ऑन द डेट साइड, ऑन द गोल्ड साइड, बट यूजुअली हमारे स्मॉल केस सारे ही इक्विटी हैवी हैं. विच सिंपली मीन दैट म्यूचुअल फंड में जो आपका एक्सपोजर अगर वो इक्विटी फंड्स में है, तो इट शुड बी कंसिडर्ड इन द सेम परसेंटेज एज दी स्मॉल केस कॉम्पोजिशन, बिकॉज वो इक्विटी इक्विटी एक्सपोजर हो गया. जो डेट एक्सपोजर है आपका, जो कि एक से यूजली लोग रूल फॉलो करते थे पहले, 100 माइनस योर एज, कि जितनी आपकी एज है 100 में से माइनस कर दो, उतना आपका एक्सपोजर इक्विटी में होना चाहिए. जो आजकल के नए बच्चे हैं, नई यंग जनरेशन है, काफ़ी इन्फॉर्म्ड हैं,
रिस्क एवर्स नहीं है, सो वो लोग 120 माइनस एज बोलते हैं कि इफ यू आर 30, 120 माइनस एज इज 90। और अर्लियर तो वो 80-20 होता था। 30 का कोई है मान लो, तो वो पहले 70% इक्विटी बोलता था, अभी वो बोल रहा है कि आई कीप इवन हायर, आई कीप इवन आई एम 30, आई कीप हायर इक्विटी बिकॉज ऑफ द न्यू फॉर्मूला नहीं है अगेन। बट हाउ डू यू डिसाइड, राइट? यू हैव टू हैव सम नंबर। सो रूल ऑफ 100 बोलते थे, बहुत पुराना रूल है फाइनेंस में, रूल ऑफ 100। 100 minus your age should be your equity exposure, which includes small case and equity mutual funds, and remaining is your debt exposure, as I mean as a very common example, right? ये बहुत ही बेसिक, मैंने एक रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 100, ये सब एक वीडियो बनाया था 4-5 साल पहले, मेरे चैनल पे है, देखना आप। अमित जी को 10 लाख रुपए डाल रहे हैं, और कब डालने चाहिए अमित जी? जब आपकी खुशी है डाल दीजिए, आई मीन आपका पे मनी है, आपको प्लान करना है, पॉइंट बिंग रीबैलेंस का वेट करिए जाते, आई थिंक दैट वुड बी आइडल, आई वुड से। Aman ji बोल रहे हैं प्लीज कॉल सम अदर्स, या आई मीन आई विल ट्राई, आई हैव नॉट येट स्पोकन टू एनी स्मॉल केस मैनेजर, सो बट मैंने इस बारे में कि मैं कुछ पॉडकास्ट सोच रहा हूँ, बट बनाऊंगा मैं, और सो दैट्स देयर। एंड नीचे नहीं लिख रहे हैं कि अल्फा ब्लैंड ने तो रिटर्न बनाया है 3.5 4% का सिंस Jan 12। सो अगर अल्फा ब्लैंड ने रिटर्न बनाया 4% का, और इन्वेस्टर इज सिटिंग एट -7%, सो यू सी देर इज अ गैप, राइट? देर इज अ गैप इन एग्जीक्यूशन, कुछ तो गड़बड़ है, आपका रीबैलेंस शेड्यूल में कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अगर इंडेक्स ने बनी बनाया और आपका नहीं बनाए, देर इज सम गैप देयर, सो वो फिक्स करना बहुत जरूरी है। ओके, इस ट्यूसडे अल्फाबेट का ये बैलेंस नहीं आएगा, सरकार, मिस्टर सरकार, देर इज नो पॉइंट यू participating, selling, buying worth of crores of money, right? We have crores of capital invested in Alpha Blend. आप उस volatility में और volatility क्यों ऐड करोगे, जो ऑलरेडी volatile market होगा? And why you would want to say get slippage of the price? We will go, as I've been saying, last week हमने कैंपेन में रन किया था 4 जून तक, to participate in the rally up to the election results, and उसी के उसमें we have been saying that do not add more capital, remain invested, do not exit, and do not change the composition, right? हम लोग अगले अगले पे रिबैलेंस करेंगे, बिकॉज एक आध आपको पता है ना, एक आध कंपनी है जो जो काफी मूव हो गया है, इट हैज बीन गुड, वेरी गुड मूव इन अल्फा ब्लेंड, सो उसको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। Okay, by any chance, if exit poll results are not in favor of current government, are you planning to rebalance to liquid bees to gold bees on Monday for some time to avoid the volatility? जो यदि मंडे तो नहीं, we'll wait for this week. मार्केट तो 1-2 दिन तो कुछ भी रिएक्शन दे सकते हैं, राइट? ऊपर नीचे, बट जब थोड़ा सेंस प्रिवेल करेगा, when the sense will prevail in the market, which will we say by the end of the week, then we'll decide that it's a long term downturn, it's a long term downside which we need to protect, further draw down so that we remain in a safer asset, and then come back again with full once the market are in the back in the direction. But having said that, I am not expecting market, ये भी हो सकता है कि देखिए मार्केट हैव बीन करेक्टिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, थोड़ा सा जिससे कि थोड़ा सा सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा सा मार्केट राइज हो जाए उस दिन। दूसरी बात, मार्केट इसको एक अन नॉन इवेंट भी ले सकता है, अगर मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, जितनी सीट्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर उतनी सीट्स आती हैं तो मार्केट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, तो इन मार्केट में इतना कुछ होगा भी नहीं। बट हाँ, विल डिसाइड फॉर द नेक्स्ट रिबैलेंस, ऐसा कुछ इमरजेंसी में कुछ नीड नहीं है करने की। अभी एसआईपी करना चाहिए क्या? एसआईपी करिए सरकार, मिस्टर रजनंदिनी जी, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग द मिस्टेक ऑफ व्हाट आई एक्सप्लेन इन द बिगिनिंग, दैट आप कुछ भी रैंडम रैंडम अमाउंट ऐड कर रहे हो, कुछ भी स्टॉक्स खरीद रहे हो उसकी वजह से, विच इज नॉट मैचिंग टू दी पोर्टफोलियो स्टॉक स्मॉल केस। सर, आप जब रीबैलेंस स्टॉक करते हो तो क्या उस दिन स्टॉक ओपन रहते हैं, रेट पर ऐड करते हो क्या? ओपन रेट बोले तो रमन, रीबैलेंस आई थिंक स्मॉल केस आर एक्सिक्यूटेड एट मार्केट प्राइस। सो जब आप एग्जीक्यूट करोगे एट दैट पॉइंट इन टाइम, देन द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड। भूषण बोल रहे हैं वेरी राइट सेट सर, जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर, अल्टीमेटली रिटर्न विल बी सीन, इट्स टू अर्ली टू से। एब्सोल्युटली, थैंक यू भूषण जी। गौतम, नेक्स्ट 1 ईयर वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग इन रेट कट सिनेरियो? Yeah, I mean, a lot of money will come when the rate cuts will happen. Inflow will come, rate cut तो होगा, and therefore we will get the advantage. कूपन मल्टीफैक्टर का है वीरेंद्र, आप मतलब कूपन तो क्या, आप कभी भी टीम को पिंग करो, टीम हमेशा अवेलेबल रहती है टू टॉक आउट एंड वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल वी डू।
सर डोंट लिसन टू एवरीवन, स्टिक टू स्ट्रेटजी फॉर हाई रिटर्न, पीपल विल कम ऑटोमेटिकली। नहीं नहीं, ऐसा मन, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि, एंड आई डू लिसन टू एवरीवन। मेरे यूजर्स ही मेरे इन्वेस्टर्स हैं, मेरे यूजर्स ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप ही लोगों को सुनता हूँ। लेकिन वी डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल सेइंग कि नहीं ठीक है, ये खरीद लो, ये खरीद लो, इसमें डिफेंस में लगा दो, बिकॉज हम जो कर रहे हैं वो हमें पता है कि व्हाट वी आर डूइंग, राइट? सो वो अल्टीमेटली टाइम विल डिसाइड कि हाउ डू वी डू। बट सुनना तो पड़ेगा ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर कस्टमर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे फील, हाउ दे फील। दैट्स व्हाई वी हैव नाउ स्टार्टेड आवर कम्युनिटी आल्सो, सो दैट यू फील मोर एंगेज्ड। ऐसा ना लगे पता नहीं कौन है, पैसे लगा दिए फिर हमें याद नहीं आया फीस लेने के बाद। So we want to be very active in that community. Plus, but what I was saying, yeah, we don't get influence by comments कि सर आपने ये वाला स्टॉक नहीं लिया, ये वाला क्यों लिया? There is a process which we follow. Naveen saying, I trust Golfi. Within 1 month, I got 10%. Okay, but due to market, I'm not getting any return. I accept it. I understood that two stock will perform very well and thus will not. I'm here to support. Thank you so much, Naveen ji. Raghuveer, hello, sir. In the railway sector, Raghuveer is my friend. He's saying hello, sir. I think no need to. He's my batchmate. So, hi, Raghuveer. Thanks for joining. Is IRFC still good to invest since it's already given 30%? So, Raghuveer, I don't talk individual stock in any public forum unless it is in our coverage. And no sound. How come? साउंड नहीं आ रहा किसी को भी? एक बार कंफर्म कर दो जल्दी से। साउंड नहीं आ रहा? हेलो हेलो। अच्छा, उपेंद्र जी ने कह दिया, मैसेज रिट्राइट कर लिया। सो रघुवीर सर, आई डोंट टॉक अबाउट एनी इंडिविजुअल कंपनी इन एनी पब्लिक फोरम unless it's a part of our coverage, and I talk that in our like investor community where the subscribers are with us in that meeting because they are already a subscriber and we are covering. आ गया उपेंद्र, good. So but thank you Raghuveer for tuning in. गौतम, नेक्स्ट 1 ईयर वैल्यू हो गया, अच्छा हो गया कैल अल्फा रीबैलेंस बी ऑन नीड बेसिस। हर्ष, कुछ बात चल रही है, आई मीन व्हाट, एज आई सेड राइट, देयर आर लॉट ऑफ फीडबैक कमिंग व्हिच वी आर ऑफ कोर्स taking from all of you. There's a lot of feedback coming ki there are set of people who are very uncomfortable investing in companies which are beyond Nifty 500 universe, which means smaller companies which are 3,000 crore market cap, 5,000 crore market cap. सो बहुत सारा हमें काफ़ी इनपुट्स आ रहे हैं कि स्ट्रेटजी तो हमारा जो स्ट्रेटजी है दैट विल रिमेन इंटैक्ट, बट पीपल आर सेइंग दैट कैन यू लॉन्च, मे बी नॉट नाउ बट मे बी व्हेन वी फिनिश आवर 1 year, universe specific, because size we were not using as a factor. So people are asking if they have more comfort toward large cap, if they have more comfort toward any specific cap, can you launch a alpha blend, for example, for Nifty 200 universe, so that alpha blend the same strategy, but the composition will only be 200 stocks, right? The universe will only 750. Because if you think about it, all of these statistical things, right? Momentum, alpha, they're all relative, which means the universe we give, it will tell you Nifty 50 में alpha कहाँ generation है, Nifty 200 में alpha कहाँ generation है. So what we might do, if the feedback will continue to come, that there are people who are not comfortable going in a smaller market cap because they feel more comfort, we will might launch say Nifty 200 baskets, and those baskets would be need basis, if that answers your question, Harsh. Vivek is saying balance basket performance very poor since last quarter. I understand. I was in February and getting 10% minus. Yes. I are you doing rebalance of this in June? Vivek, I understand. Sorry to know that. Yes, from 19th February balance, it has been very poor. And I again request that आपने एक quarter दिया, एक quarter और दीजिए. I'm sure I see some light at the end of the tunnel, and rebalance will be there in June. There will be a little bit of rebalance. But I'll, if you're a part of community, if not, please join. मैंने अभी काफ़ी clearly बताना शुरू किया है कि हमारे पास coverage कब से है किस कंपनी का. So when you think that you are booking loss, it may be that it's the timing, and we will transparently showing to all our investors that हमने coverage कब से start किया है, whether the company we are rebalancing is actually booked in profit or booked in loss. So but yeah.
Rahul Gupta, what is the CAGR you think Alpha Blend Small Cap deliver this year? Any guess you want to take? No, I don't take any such guesses, Rahul, because I do not know. But the idea is to able to consistently beat the benchmark over a long period of time. Someone is saying, I am a CSE student. I understand career in quant finance. Any recommendations? Absolutely. There are very, very good forums, very good courses, which you can, very good books, which you can start reading. Start with Multifactor investment framework. Read about pharma French models. And you can ping us. You can ping me, book a meeting with me, and I actually help you to know more. Yeah. Raghu Singh, good to see you're helping investors. Proud of you. Thank you, Raghu. Thank you for your nice comments. Okay, I think questions be are finishing now. So I think I've answered all the questions without skipping any single. It was wonderful to kind of catch up. But last में I'm again just checking finally. We all support goal fee Sovic, but constructive. Absolutely, it's not a criticism. It's fact, right? I mean, I absolutely has never taken any feedback. मुझे काफी लोगों ने YouTube पे कमेंट लिखा. मैं ये बात बताता हूँ आपको. या एक चीज एक इंसिडेंट बताता हूँ. Somebody wrote a very nice, I mean, of course, काफी फीडबैक इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस कि हो सकता है आप लोग मिले हुए हो प्रोमोटर से एंड जो कंपनी में रिकमेंड करते हो वो नीचे चली जाती है एंड ऑल दैट, राइट? ही गोट अ वेरी नाइस, मतलब डिटेल में अच्छे से उन्होंने हमारी डांट लगाई. Very good investor, right? He had been with us for some time. Then he said, I'm very dissatisfied. आप मेरा रिफंड प्रोसेस कर दो, समथिंग लाइक दैट. तो जहाँ पे हमें लगता है कि कोई जेन्यून इन्वेस्टर है, एंड ही ऑफ कोर्स इज अनहैप्पी फॉर जेन्यून रीजंस, आई नेवर से कि नहीं, विल नॉट. मुझे लगता है कि वैसे तो ऑफ कोर्स फीस इज नॉन रिफंडेबल, बट कोई भी जेन्यून इन्वेस्टर आता है, आई एब्सोल्युटली से कि आप प्लीज, नो प्रॉब्लम. Then next day he came back that आपने मेरा कमेंट हाइड कर दिया. And I have the like a kind of a strong mandate कि मैं कभी कोई कमेंट डिलीट वगैरह नहीं करता, ना ही हाइड करता हूँ. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेटजी, राइट? मैं क्यों करूँ? जो जो भी किसी ने लिखा है वो फैक्ट है. अनलेस समथिंग इज काइंड ऑफ again, something is disrespectful, or which is not allowed to be written in public forum, then I team might hide, but usually any feedback we don't, right? So काफी लिखा. फिर उन्होंने मुझे अगले दिन बोला कि आपने तो फिर वो कमेंट ही मेरा छुपा दिया. मैंने उन्हें स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि नहीं सर, हमने नहीं हटाया, जबकि उनके पास मेरा पर्सनल नंबर था. नाउ आई सी ही रिमूव दैट कमेंट, which is I mean nice of him, but अगर वो रहने भी देते तो ठीक था. Because the point being, be transparent, and thank you Souvik for all the feedback. विवेक, आपका ओल्ड स्ट्रेटजी बेटर था अल्फा ब्लाइंड का इनिशियली? नहीं, हमारा स्ट्रेटजी विवेक चेंज नहीं हुआ है. स्ट्रेटजी सेम है, मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से. और होता क्या है कि जब नई स्ट्रेटजी होती है ना, जब नया नया स्मॉल कैप होता है, तो वहाँ पे हमारे पास पुराना बैगेज नहीं होता है. जब अभी क्या है कि आपके पास एक ऑलरेडी एक स्मॉल केस में 7-8 कॉम्पोजिशन है, एंड एज अ स्ट्रेटजी, एज अ मैंडेट, वी डू नॉट चेंज द एंटायर व्हाट यू कॉल कॉम्पोजिशन. ऐसा नहीं होता कि 7 का 7 नेम चेंज हो जाते हैं. ऐसा कभी नहीं होता, राइट? इट इज ओनली 2-3 नेम्स विल गेट चेंज. सो कभी भी क्या होता है, व्हेन द portfolios get older, you are covering a company from, say, couple of months. You have a stock from 2-3 months in your portfolio, या say 2-3 weeks from the portfolio, और आपने अभी पार्टिसिपेट किया. अब हमारे पास जब रीबैलेंस का ऑप्शन आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आई कैन रिमूव दैट. जब स्टार्टिंग में नया नया था तो मार्केट वाज वन वे अप, सो एवरी वीक देयर वाज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बुक प्रॉफिट्स. अभी क्या है, बिकॉज मार्केट हैव बीन वॉलेटाइल, से स्टॉक इज सिटिंग इन ह्यूज काइंड ऑफ ड्रॉ डाउन, देन we can't really rebalance it, right? Because it will really book the loss of the investors. So it's unfair to rebalance. अगर अगर हमें खाली नंबर्स मैनेज करने हो कि हमारे स्मॉल के नंबर्स अच्छे लगने चाहिए, देन तो मेरे पास एक्चुअली में आई हैव द फुल अथॉरिटी, राइट टू चेंज द पोर्टफोलियो एवरी वीक, राइट? मैं तो पूरे पूरे हर बार नए नए नाम दे सकता हूँ. उससे मेरा स्मॉल केस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि हर बार मैं नए नए नाम लेके आऊंगा. लेकिन दैट इज नॉट द वे, राइट? यू शुड अप्रोच. People have invested their real hard-earned money in crores of rupees, right? Multiple crores of rupees, right? The Alpha Blend में कितना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है.
अब जब वो इतना इन्वेस्टमेंट है तो इट इज रियल मनी. यू हैव टू गिव टाइम टू दो स्टॉक्स. सो ये डिफरेंस होता है विवेक, जब एक पोर्टफोलियो थोड़ा पुराना हो जाता है, बट इट्स नॉट एन एक्सक्यूज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस. एब्सोल्युटली विल कम बैक. गूगल फॉर्म देखता हूँ मयूर. रॉबिन, कैन यू शेयर रिसर्च रिपोर्ट मल्टीफैक्टर पोर्टफोलियो स्टॉक्स टू बिल्ड मोर कन्विक्शन? हाँ आशीष, रिसर्च रिपोर्ट नहीं बनी है अभी फाइनल, बट आशीष एक सेशन शेड्यूल करते हैं. क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा सा उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि वो, बिकॉज रिपोर्ट हैज टू बी डिजिटली साइंड इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. तो हम लोग थोड़ा वो फाइनलाइज कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द फॉर्मेट, बिकॉज इट हैज टू बी डिजिटली साइंड सो दैट इट इज कंप्लायंट टू द लॉ. बट एक सेशन शेड्यूल कर लेते हैं इन अ वीक्स टाइम मे बी, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट द कंपनीज देयर. Rahul, great job, Robin, with your proactive approach and level of attitude. I am will become. Thank you, Rahul. Sir, I have recently taken your multi-factor small case. Can I take SIP in this monthly basis? No. मत करिए राना सिंह जी, मेरा वीडियो देखिए दोबारा से. मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है कि ऐसे SIP करके बहुत एवरेज हो जाता है. मैंने एग्जांपल दिया कि वेयर यू स्टार्ट विद सम अमाउंट, यू डू SIP ऑफ 5,000, यू विल एंड अप बाइंग द सेम कंपनी अगेन एंड अगेन इन दैट रीबैलेंस. आप वही कंपनी हर महीने खरीदते रहोगे, उन 9 कंपनी में से 2 कंपनी आपको हर महीने खरीद लोगे आप, रीबैलेंस के चक्कर, SIP के चक्कर में. और बिल्कुल भी रिटर्न मैच नहीं करेगा आपका जो नंबर रियल रिटर्न होगा. देव जी कह रहे हैं मोमेंटम इज फॉरेन शार्पली. एब्सोल्युटली. देव, थोड़ा सा टाइम दीजिए. अच्छा क्वेश्चन आया है. सो आई आई विल टेक द क्वेश्चन ओनली फ्रॉम द द शीट नाउ. सो एंड thank you for submitting in the Google sheet, and then we'll finish, guys. Suddenly, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा मैंने क्रिएट कहाँ किया वो फॉर्म. एक सेकेंड रुकिए आप लोग. सो दिस इज माई दिस ID. ओके. आप अगर दोबारा से मयूर दे सकते हो क्वेश्चन अभी के लिए, देन इट वुड बी रियली हेल्पफुल, because but I'll anyhow answer that question in the form in the community. That is absolutely there. But अगर आप अभी वो क्वेश्चन पुश कर सकते हो, if it is not personal question, then it would help. but अगर कोई बात नहीं, if you can't, then also I would take that question and ping you separately, because मुझे वो फॉर्म भी रीड ओनली फॉर्म में मिल रहा है. आई एम नॉट एबल टू फाइंड द एक्चुअल फोल्डर वेयर द आंसर्स द क्वेश्चंस गेट सेव्ड. सो बिकॉज पहली बार ट्राई किया है सुबह. सो सॉरी फॉर दैट. बट आप मुझे प्लीज पिंग मी हियर. लेट मी गो बैक टू द यूट्यूब हियर. वन सेकेंड. चलो ओके, पोस्ट ओके. ठीक है, आप जल्दी से पोस्ट कर दो, फिर विल फिनिश. काफ़ी बोर हो गए होंगे आप काफ़ी लोग. 33 people are still watching after 51 minutes ago. So I mean we started 51 minutes ago. So it's a thank you. I mean lot of gratitude that you are able to spend long hour on a Saturday. But please, if you can post here, that will be great. Or if you can post on this number, chat.golfi.app, I'll take immediate priority and post the answer to you. Okay, guys, thank you for so much of love. This hearts are coming. Thank you. Sir, I'm Alpha Plan subscriber. I booked a 3% loss on last rebalance due to timing. Obviously, my question currently did 4% down. Average, नहीं average मत करो. Just remain invested, Ganesh. Don't need to average it anything today as of now. ऐसे थोड़ा दिन as a status को maintain करिए. We are getting a lot of clarity in the upcoming weeks. So just don't average anything. In momentum stock, some stock is falling 8 to 10%. Then in that case, what will happen? Nothing will happen. I mean, same answer to that. I mean, if some stocks are falling, I'm sure some stocks are equally giving some balance to it. And therefore, nothing, unless nothing fundamental change to any of the company there, which will of course communicate over the community. Somebody's clicking this heart continuously, right? Right. So somebody, no. It will not be removed unless there is any fundamental change to the fundamental. So that's what I said, right? For us, it's easy to let go a stock if we want to, if our intentions were always or ever will be to maintain the numbers on the board. But it's never the case. Our intention is that investors should make returns. Our small case numbers hardly matters, and therefore it won't be removed.
unless there is a real change in the fundamental, and we know that we would know that it's our kind of a poor research, then we might, but otherwise no. All right, guys, thank you so much, and thank you so much, smileys and hearts and love. So it was a great Saturday time spent with you, and I'll stop the session now. Thank you so much.